Happy evening, everybody. Welcome to our 28th episode of our Sales Mastery Talk Show, which we have been doing for the last almost 2 years and inviting all distinguished personalities in order to discuss the relevant topics and thereby help, especially the youth, in getting new insights from these experienced, successful people. Friends, I really want to acknowledge all of you who's there in our Zoom platform, as well as who are watching us live on the Facebook, where we have nearly about 5,000 followers. And I really want to urge all of you to pay a lot of attention to today's talk show, as we have a very, very distinguished person who will be taking us through his rich experience on a multifarious dimensional qualities, experiences that he possesses. But today's talk show is called as Unleash Your Potential. This has been the title of one of my books, which I first authored. And I, for one, have a lot of affinity for this particular topic, on which I have done almost 5 to 6 years of research before I authored that book. Mainly because I, for one, believe that human beings have been endowed with infinite potential. But in actual life, if you actually see, most of us use less than 10% of that immense potential. And there are ways and means today, as we teachers, trainers, coaches, mentors know, as to how, in case if you just work on yourself, especially your beliefs, your thought processes, your attitudes, you will be able to unleash that potential and thereby exponentially leverage the humongous amount of opportunity that is available, more so in our country. Friends, today's guest of honor, with whom I'll be having a chat, is a distinguished educationalist. He's a director at NTS Edusys. He's a TEDX speaker. He's a vice president of Maharashtra Coaching Class Owners Association. He has been appointed as a social ambassador for Indian Development Forum, and is today a very, very popular mentor and guide for a number of people, especially to teachers and educationists, and is a certified graphologist who has also devised and mastered this tool in order to help people unleash their potential. Friends, put your hands together to welcome my very, very close friend, my partner, and the distinguished educationalist, Mr. Prajesh Trotsky. Can we give a round of applause? Prajesh, welcome. Thank you. Thank you so much. Thank you. 28th episode. And I'm honored that you have taken out your valuable time and are present here to share your rich experience on the various fields on which you have mastered. So welcome, Prajesh. Thank you. Thank you so much for inviting me, making a part of this talk show. Thank you so much. Thank you. Prajesh, basically, as I was sharing with you, the objective of this particular talk show is to get this valuable insights and wisdom from successful people like you, who can then, through this particular talk show, we can thereby educate the youngsters especially, and more so the entrepreneurs. Because, Prajesh, I, for one, strongly believe that for our country to really prosper and again become the Sone Ki Chidi of the world, which it was once upon a time, we require to breed those dynamic, resilient entrepreneurs. And that's exactly where I'm sure your nuggets of wisdom, which you will be sharing throughout this program, through this next 1 hour, will be invaluable. Definitely. Thank you. Prajesh, the first thing which I wanted to ask your valuable insight is, Prajesh, what do you think? What is your take on this concept that we human beings have got infinite potential, but still most of us hardly scrape the surface? Yeah. What is your take on this? So I keep on telling, I take a lot of career programs for the youngsters, like for 10th and 12th standard students. So I always say the word said by Albert Einstein, every born child is genius, but only 2% become genius. Yeah. So when a child is born,
human being means a genius has born. Every single human being, a genius has born. But what happens over a period of time, his thought process during his upbringing affects, and he starts thinking through his perception of life. Personal reception, we call it as. Perception means personal reception. So during his upbringing, whatever personal reception he gets from the surrounding, the ecosystem, he has that chasma, he has that perception, and through his perception, he sees the world. So Henry Ford said, na, ki, if you say you can, you can. True. And if you say you can't, you can't. You are right at both the places. Means if I'm saying, if Prajesh sir says ki, yes, we can, so it will happen because I am saying. And if I myself say it is not possible, then that is also right. So Absolutely. everything is me, and we don't utilize it. That is what you absolutely said it right. Ki it is, every person has that potential, but somewhere he is not unleashing it, as you said rightly. Absolutely. In fact, very well said, Prajesh sir. The one more thing I want to ask you is, normally they say that it is your, as you rightly said, the perception of your vision, which we also call as belief. Belief and attitude plays a very important part. So I would like to have your insight on these concepts. How does belief get formed, and how does this limiting beliefs, which is what, as you rightly said, is one of the reasons why most of these potential remains unleveraged. So your take on So, that. absolutely, like we teach in graphology, science through which we identify the potential. So we call it as character building, character formation. Every person has a character. So people, wherever I go, people introduce me, ki Prajesh sir, like if you call you at 4 o'clock, you'll reach at 3:45. Like my introduction itself, at the end, they will say this. कि प्रजेश सर को जहां पर भी बुलाओ 15 मिनट पहले ही पहुंचते हैं. So my character has been introduced with this line. कि wherever I go, so it is my character. So what is character? Whatever character we are carrying right now, the thing starts from thoughts, beliefs. As you rightly said, thoughts become words, words become your action, repeated action becomes your habit, and your habit becomes your character. So whatever thought process which we get during our upbringing, the crucial ages, -9 months to 14 years, these are the most crucial age. Is upbringing के time पे either ना you are taken care by your parents, by your school, by your surrounding, by your religion, by your community. So during this process, what thought process you get, it becomes your words. For example, like my parents used to always tell me, कि everywhere we should always go 10 minutes before, always reach before time. So this thought process was given to me by my parents. And the biggest part was, it was not only given by my parents, they themselves used to enact it. Like wherever we used to go. So most of the parents are not able to inculcate values in kids because they themselves don't do it and tell the kids to do it. वो खुद करते नहीं और expect करते कि उनके बच्चे करे. तो ये possible नहीं है. So my parents used to take me everywhere before time. So they said, always reach 10 minutes before time. So that thought process came into me. So in school days, I used to travel to my friend's place, and from there I used to go to school. So one fine day when I reached his home, I rang the bell. He didn't wake up. He came after 2 minutes and said, Prajesh, yaar, main abhi utha hu. You wait for 10 minutes. I'll get up. I'll ready myself and then we will go. So I said immediately, no. I cannot go. मैं नहीं जा सकता हूँ. I have to go. I cannot wait here is because 10 मिनट पहले मुझे घर पे स्कूल में पहुंचना है. So my thought 10 minutes before, which my parent told, became my words. My thought became my words. I said, no. I will not stay. I will go. Then I left. So my words became action. Thought became words and words became action. 2-3 times my friend did the same thing. He got up late. He told me to wait. I said, no, I will go. So my repeated action became my habit, and my habit became my character. So today, it's very simple for me to do this. Reach on time is very simple for me. It's not a great thing. So same way,
during my upbringing, if my parents will say ki Prajesh, it's very difficult to grow in life. We are ordinary people. हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, हम गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे. अगर ये thought process मुझे मिला, ये thought process मेरे words बनेंगे, ये words मेरे एक्शंस बनेंगे और ये एक्शन से मेरा हैबिट हो जाएगा और फिर हैबिट बन जाएगा कैरेक्टर और मैं बोलता फिरूंगा सर इट इज नॉट पॉसिबल, सर ये पॉसिबल नहीं है मेरे से. इज ओनली बिकॉज मेरा परसेप्शन वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर साक्षात ब्रह्मा भी आ जाए और बोले कि बेटा तू कर सकता है. बोले नहीं सर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यही बम्बार्डमेंट हुआ है बचपन से. जो बम्बार्डमेंट होगा वो ही उसका परसेप्शन बनेगा और उसका बिलीफ उतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप हालत खराब हो जाएगी. दैट इज हाउ इट इज. माय मदर यूज्ड टू ऑलवेज से कि बारिश में भीगोगे तो सर्दी बुखार आएगा. सो मैं जब भी बारिश में भीगता तो सर्दी बुखार आ जाता because that thought process was there. But unfortunately, but fortunately for me, 26 July happened. The entire Mumbai was drowned. And मेरे घर में ये हाइट तक पानी था. So I was wet for 2 days. पूरा गीला कपड़ा पहन के and I was just like staying back home, पानी निकाल रहा हूँ and everything was happening. 2 days I was wet, but कोई fever नहीं आया. Very important now. Because that 2 days, survival was more important. ना जिंदा रहना important. So the thought process which my mother gave कि बारिश में भीगोगे सर्दी हो जाएगी ये नहीं आया उस वक्त में because जिंदा रहना बारिश रुकेगी कि नहीं क्या होगा. तो जब higher आया तो lower चला गया. When higher comes, the lower goes. Right. When we climb the step, we raise our leg and put on the upper step, then only the lower step is released. So lower thought process को निकालने के लिए higher thought process पे जाना बहुत जरूरी है. That is how things work. And the belief pattern broke. उस दिन वो टूट गया because मैं बोला 2 दिन हो गए बारिश हो गई सब चीज हो गया लेकिन बीमार नहीं पड़ा. अच्छा हो गया thought process ही नहीं आया. From that day I don't fall sick when I'm in rain and all. Otherwise बचपन में जब भी बारिश में भीगता था मैं बुखार आ जाता था मुझे. This is the classic example which I always say. Absolutely. सर ये जो आपने बताया ये बहुत ही अहम बात है और इसमें और एक चीज जो मुझे याद आया कि हमारे जो एजुकेशनल सिस्टम है एंड मेरा एक मेंटर बताते थे he was always saying this कि the biggest problem in the world today is the problem of lack of proper education. Right. And that's where you as a really deep and a prominent educationist and a teacher by passion and profession, I would like to have your insight because मेरा भी सोच वही है which I developed on the basis of the tutoring by my mentor Blair Singer that अगर education system बदल जाए so automatically this world will become a better place because today the most important problem is we don't have real educated people. Yes. And real education is what you just talked about, which I for one believe is people with the empowering beliefs, positive beliefs. Your take on this? Sir, as your program name is Unleash Your Potential. So definition of education, people have no idea actually. Right. Definition, I think it has been taken, education, the word has been taken from some Persian word or educatia. Educate. Persian or some word. Educatia means draw out. Yes. Education means to draw out. So draw out the potential which is already existing. So during his entire education journey, a child should get a platform where he draw out his potential which is already existing. I always say कि what we draw out from a well, we draw out water from a well. अभी कुआं कहाँ खोदा जाता है? कुआं वहीं खोदा जाता है जहाँ पानी होता है, like where water is existing. We just break the rocks on the top and just we remove that water out which was already existing. The same way every born child has a potential inside. We have to draw it out. The roles and responsibility of every education system should be draw out the potential which is already existing. इसके लिए
स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ नॉलेज which already exist. That's the definition given by Swami Vivekanand. So I always say कि बच्चे को ना 4th स्टैंडर्ड में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला सिखाने के बाद बच्चा रोड क्रॉस करना नहीं सीखता है ना. टीचर ने सिखाया, देन ही टेक्स अ नोटबुक एंड ही स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड. वो ड्राइवर से पूछता है कितना स्पीड है, वो ड्राइवर वहां से 40 किलोमीटर बोलता है पर आवर. फिर टेप लेके रोड को नापते हैं, फिर से ना किलोमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करके मीटर पर सेकंड एंड ऑल. 30 सेकंड, सॉरी आई कैन नॉट क्रॉस. द चाइल्ड स्टैंड्स, इवन एवरी ह्यूमन बीइंग स्टैंड्स एट द क्रॉस रोड, judges the speed of the vehicle. The speed is more, distance is more, time is less, I cannot cross. So he knows this mathematics. When he's born, he has come with that maths, he has come with that science, he has come with that language, he has come with those potential. टीचर का क्या, इसको ट्यून करना है और उसको ना लेट इट सरफेस इट आउट, उसको आने दो बाहर. बट प्रीडोमिनेंटली हुआ क्या है टीचिंग प्रोफेशन में कि आई ऑलवेज से कि 2 वर्ड में टीचिंग खत्म हो जाता है. A teacher will teach a topic. At the end of the topic, teacher will say followed. So बच्चे लोग को बोलना है not followed. Actually, उनको कुछ समझ में आया नहीं. So by the time a child will say not followed, teacher only says not followed. तो बच्चे बोलते हैं क्या बोलूंगा तो मैं मार खाऊंगा. तो उससे अच्छा तो kids have made a group में लोग क्या बोलते हैं में यस टीचर ऐसा चिल्लाते, यस फॉलोड तो बोले यस टीचर. ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप जाओ किसी और को भेजो, हमको कुछ समझ में नहीं आया, मतलब यू गो, वी कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग. सो व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर गिविंग, एक्चुअली ना वी आर गिविंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिस्ट्री, ऐसा हम लोग इससे दे रहे. देना नहीं है, ऑलरेडी है, उसको बाहर निकालना है. लेकिन हम लोग डरते हैं ऐसे टीचर, अरे बाप रे ऐसे कैसा बाहर निकाल सकते हैं, उसको आता है कि नहीं. ऐसे नहीं होता है. किड्स आर सो स्मार्ट, दे आर सो वंडरफुल, बट समवेयर yes, we also came from this education system only, but at the end of the day we got some good gurus, we got some mentors over a period of time, and we could unleash our potential. For example, I always say when I take a career talk, 6 September 1979, ईश्वर को 5:55 को मेरा ख्याल आया और मेरा जन्म हुआ, और वो चाहते थे कि फ्यूचर में बच्चों को करियर के बारे में बताएं. तो 43 years पहले God had a thought, है ना, every born child is a new thought of God. Yeah. God had a thought and I came into this world and I could unleash my potential of a public speaker, of a counselor, of a trainer. So every child needs to be tapped up with the reservoir which he has inside. Then only we will say our child is educated. Otherwise, we will say they are literate. 10th, 12th, graduation, post-graduation, what we'll call them as literate. That's right. Educated? No. No. Absolutely. No. That's it. Yeah, in fact, Prajesh, you said it, in fact, I for one believe, this equation, education is not information, as you rightly said. This is literate. Education is transformation. So constantly converting your limiting beliefs into liberating beliefs is what is the thing. And I think even I, as a teacher, coach, and trainer, we know how if a teacher or a trainer or a coach really can just transform that, and as you say, educing it out of the participant, out of the student, this world would be so much of a better place. Because I totally concur with you that every born child is a genius, and this world has got so much of abundance, but still people exist in this world as if there's so much of scarcity. और सब लोग जमा करने में लगे हुए हैं, होल्डिंग करने में. Everybody just takes care of a couple of fellow human beings. We will not have anything like a starvation or कोई भूखा सोए. कोई जरूरत नहीं है. As you rightly said, हमारा poor सोच, poor thinking, poor education के वजह से
there's so much of malice and so much of challenges in this world. And I really wish, more and more people take teachings from people like you, and thereby open up their mind and thereby make this world a better place. Right now, I always say ki, when a teacher finishes, student graduates. Yes. But when a guru finishes, student celebrates. Yes. So, being a teacher, let's be a guru who unleash the potential always inside. Ki, so, when I'm teaching, I make them Atmanirbhar. Matlab, ki when I'm teaching mathematics, I teach only 2 sums and remaining 20 sums, they are going to do it. Yes. I don't want all the 20 sums to be taught from my. If I'm teaching all the 20, so he's nirbhar on me. He's nirbhar on me. And I've seen many people like, many teachers like, सर सब सम सिखाओ ताकि उसको लगे कि उसको मेरी जरूरत है. अगर हमने सब नहीं सिखाया तो वो हमेशा बोलेगा कि यार मैंने खुद से सॉल्व किया. मैं बोला यही तो करना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, so that he should be in a position कि मेरे absence में भी he has that just to do it. He should not be dependent. So कहते हैं कि leaders are leaders when they create another leader ना. Yes. I should not have followers. I should have leaders. I want them कि अपने ही life में आगे बढ़े. So whoever I taught, like, so many of them joined back into teaching profession. In my school days, when I taught when I was teaching in schools and coaching classes, many of my students now became teachers. Now they are running their own coaching classes and trying to follow whatever I did those days. And also they keep on telling us कि सर अब हम खुद प्रजेश सर बन गए हैं. मतलब यही चाहिए और मेरे पास आना भी नहीं. I don't want you coming on my feet and following कि प्रजेश सर आप सब कुछ हो. नहीं चाहिए, तुम मेरे से आगे निकल. You can go ahead. Awesome. So, that is how it is. You have taught almost 15,000 teachers trainer courses also. And how do you feel? What is your sense about the new breed of teachers? Are they coming out with this enlightened point of view about the power of teaching profession? No, sir. Like that's the dilemma of our education industry today. Like now you keep on asking, when I'm teaching, I keep on asking in classrooms, what you would like to become. So boys look predominantly will say doctor, engineer, pilot. Girls will say fashion designing. They will say air hostess, doctor, CA, CS, IAS, IPS. But rarely you'll see a hand is raised for a teacher. Rarely मतलब 100 में एक ने अगर हाथ ऊपर उठा दिया, वो भी जो उठाएगा ना वो लड़की रहेगी. मेल तो रहेगा ही नहीं. ठीक है ना. So पूछेंगे, तो मैं पूछा एक दिन क्लासरूम में कि why anyone, like none of us want to become a teacher. तो एक बच्चा खड़े रह के बोलता है कि सर बहुत रेस्पॉन्सिबल वाला प्रोफेशन है, like so it's very difficult to come into teaching profession. तो फिर दूसरा बच्चा बोलता है सर मुझे खुद को कुछ नहीं आता, मैं दुनिया को क्या सिखाऊंगा. So that is the second. And third एक तो एकदम शॉकिंग था, सर इसमें पैसे बहुत कम मिलते हैं. So तीन नोशन है टीचिंग प्रोफेशन का. एक रेस्पॉन्सिबल है, सेकंड आई एम myself don't know anything, and third one it is the least paid profession. And to be very frank, then Indian इसमें except people those are into government colleges and schools and all, so they have been paid with 6th pay, 7th pay commission, 80,000-90,000, 2 lakh rupees salary. And in private institutes and all 25,000 30,000 खींचेंगे तो 35-40,000. So Swiggy, Zomato में you can earn 35-40,000 rupees just by delivering the things. So Indian context में teachers are the least paid, and apart from them इसमें आना नहीं है किसी को. So मतलब बुरा है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि एक अनएजुकेटेड इंसान को जब कुछ काम नहीं मिलता है तो वॉचमैन बनता है, और एक एजुकेटेड पर्सन को जब कुछ काम नहीं मिलता है तो टीचिंग लाइन में आ जाता है. चलो ठीक है करके. बट स्टिल यंगस्टर्स आई कैन सी, बिकॉज बीइंग इन एसोसिएशन, engineers, chartered accountants, so those who have an inner potential to teach, so I can see that flush is coming here.
good engineers are there in our group, good chartered accountants, CS, many people are there. In fact, few doctors, those who are practicing, they are coming to teaching also. But still, we need a lot of upgradation into this profession. बहुत important है. मतलब, I was sitting in a staff room. See, with due respect to all the teachers, those are teaching very nicely. But I was sitting in a staff room and एक teacher थी MSc, BSc, MSc, MAd and BAd. मतलब क्वालिफिकेशन में सबसे ज्यादा था उनके पास. तो मैंने ऐसे पूछा कि आपने MSc किया, आपने BAd किया, आपने MAd भी किया, बाप रे, मतलब जबरदस्त एकदम. तो मतलब क्यों किया, मैंने सब पूछा. तो बोले कि ऐसी बैठी थी तो मैंने BAd कर लिया, ऐसी बैठी थी तो मैं क्या करूं, तो मैंने MAd कर लिया. तो मतलब ऐसे बैठने के लिए किए कि see, I want to teach, यार. मतलब what is MAd? I keep on asking, what is MAd? It's Master in Education. Master in Education. I asked, who is a master? वो टेलर को हम लोग मास्टर बोलते हैं, हम टेलर नहीं कहते, बिकॉज स्टिचिंग का, टेलरिंग का मास्टर है. तो आर यू अ मास्टर इन एजुकेशन? एक बच्चा खड़ा रहता है, कम मार्क्स लाता है या मस्ती करता है, तो सब लोग बाहर निकाल, गेट आउट ऑफ द क्लास. मतलब एज ए टीचर मुझे इतना ही मालूम है कि इसको क्लास से बाहर निकालना है. सो व्हाई डोंट यू मास्टर द स्किल्स ऑफ हैंडलिंग द किड्स ऑल्सो ना? Yes. 50,000 फीस भरा है बाहर खड़े रहने के लिए, hence he becomes an outstanding student who always stands out after paying the fees. So Yeah. I always feel, I always say teachers कि subject knowledge, okay, but along with that mastering the teaching profession is very very important. नहीं तो फिर बच्चे जाएंगे किसके पास ना. मैं हमेशा बच्चों को पूछता हूँ, मतलब बोलता हूँ पेरेंट्स को भी, क्लास ओनर्स को भी, टीचर्स को भी, कि बच्चा स्कूल में जाता है, उसको शायद नहीं समझ में आता, फिर कोचिंग क्लासेस में आता है, उसको वहां पे भी नहीं समझ में आता, तो फिर नीचे क्या पाताल में जाएगा? मतलब जाएगा किधर? मतलब वो तो तुम्हारे, वो तो आ रहा है तुम्हारे पास टू टेक समथिंग, टू, मतलब कि हो अगर अंधेरा तो रोशन कर दे अपने नूर से, भटका अगर हो कोई वो भी देखे दूर से. सो यू एज अ टीचर शुड डिस्पेल द डार्कनेस ना. मतलब वो जो डार्कनेस है वो डिस्पेल नहीं हुआ तो तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है, नहीं तुम्हारा होना ही क्या मतलब. सो टीचिंग वी रिक्वायर्स, लाइक वी आर फेसिंग चैलेंजेस, बट स्टिल पीपल आर देयर. सर वही है कि अगर आप एडवांस कंट्री में जाओगे, स्पेशली यूएसए जैसे जगह पे, वहां पर टॉप सीईओज और टॉप एग्जीक्यूटिव्स ब्रेक लेके दे गो टू यूनिवर्सिटी टू टीच एंड देन मे बी आफ्टर सम टाइम दे कम बैक. लाइक हमारे जो आरबीआई गवर्नर थे, okay, and he came here, he worked here for 2 years and then he went back again to teach in Chicago Yes. University. So like that, as you rightly said, ये होना बहुत जरूरी है. और एक मैं पहलू में लाना चाहूंगा यहाँ पर कि एवरी टीचर इज अ लीडर, एंड उनका जो लीडरशिप है वही प्रभाव करता है अपने जो यंग जनरेशन को, यंग माइंड को. Yes, absolutely. एंड उनका जो प्रभाव है, उनका जो इम्प्रेशन है, वो इतना बेहतरीन होता है कि दे कैन ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ. एंड सो वेरी वेल टेकन. सेकंड, आई वांट टू गो टू द नेक्स्ट dimension of your experience is parenting, or on coaching on parenting. I think almost 30,000 parenting, no, you have coached almost 30,000 parents. I want to ask you this, where is the lacuna in the terms of mindsets of parents today, which is making them not be able to guide their children? Yeah, so yesterday also I was discussing with one group. So what has happened is, like, values are missing today when we talk about values. So parents को लगता है कि स्कूल वैल्यूज दे रहा है, स्कूल को लगता है कि पेरेंट्स दे रहे हैं. Yeah. So कौन दे रहा है ना, who is giving it? So when we were in school days, like हमारा बचपन जो था, so we had two compulsory
subjects called as community living and moral science. Yeah. So community living is how to live in a community, and moral science, the science which taught us morals. ये 9th standard तक compulsory subject था. So even though these were subjects, इसमें अच्छे अच्छे stories होते थे जिसमें end of the chapter में हमको एक moral of the story मिलता था. And एक teacher जब सिखा रहा है तो ऐसा लगता था, no, this is very important. Like हमने को life में ethically काम करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सब चीजें होती हैं. So what is happening in this situation? I always call कि parenting in the 21st century. We parents were from 20th. हमारा upbringing 20th में हुआ था और हम अभी हमारे बच्चों को 21st में सेंचुरी में पेरेंटिंग करें तो हमारे जो पैटर्न्स थे ना, वो पैटर्न्स अभी नहीं चलेंगे. वो जो तरीके थे हमारे पेरेंट्स ने जो हम पे किया था, हम अपने बच्चों पे नहीं कर सकते. बिकॉज दिस किड्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर डायनामिक एंड दे आर वेरी इमोशनल सबसे ज्यादा हो गए. सो हमारे तौर तरीके तभी के नहीं चलेंगे. और कहीं ना कहीं व्हाट हैज हैपेंड इज पेरेंट्स भी बिजी हो गए हैं. पेरेंट्स हैव बिकम वेरी बिजी. When I'm not only talking about the affluent class, the middle class, एक स्लम एरिया के कोचिंग क्लासेस के बच्चों को भी अगर आप देखेंगे ना, तो डैडी समझो भाजी तरकारी बेच रहे, तो मम्मी घर का काम करने गई. सो दोनों जन एब्सेंट है घर पे. बोथ ऑफ देम इट माइट बी फाइनेंशियल चैलेंजेस, बॉम्बे हैज बिकम वेरी कॉस्टली, ये सब फैक्टर्स रखते हैं हम लोग एक तरफ है. दिस आर द रीजंस. और कहीं ना कहीं देखो, इफ यू ट्रैवल इन अ ट्रेन ना आप, तो देयर आर शैंटीज ना, झोपड़ियां हैं वहां पे रेलवे ट्रैक्स, तो उसके ऊपर भी आपको डिश एंटीना दिखेगा और 21st फ्लोर पे भी आपको डिश एंटीना दिखेगा. सो व्हाट हैज हैपेंड इज एंटरटेनमेंट यू विल गेट इन अ स्मॉल हाउस आल्सो एंड अ 3 BHK फ्लैट आल्सो. तो एंटरटेनमेंट के लिए टीवी चाहिए, फिर बाद में फिर आपका रेफ्रिजरेटर से लेके लग्जरीज की जितनी भी चीजें हैं, बॉलीवुड वर्लपूल का वो रखता रहेगा तो ये वीडियोकॉन का लेगा. बट everyone wants to have that facilities of life, because of which both the parents are working predominantly, if not part time, full time, part time. अगर नहीं भी काम कर रहे, हाउस वाइफ भी अगर है, तो कहीं ना कहीं ये टीवी बॉक्स, इडियट बॉक्स हम जिसे कहते हैं, घर में आने के बाद से पेरेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी काफी, पेरेंट्स कैसे लगता है कि मैंने स्कूल का फीस भर दिया, मैंने कोचिंग क्लासेस का फीस भर दिया, तो मैंने अपने पेरेंट होने का फर्ज निभाया. माय रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर. मतलब देयर आर स्कूल्स इन विच अ पेरेंट्स मीटिंग needs to be conducted on Sunday, because if they keep it on Saturday, there will be 25% parents attendance. Sunday, 50% parents attendance. Oh. So I'm not talking about a slum school, I'm talking about an international school. Oh. So 50% parents attend करते Sunday रखेंगे. So that means what? I paid 6 lakhs, I paid 5 lakhs, I paid this amount, I did this. बच्चे को मोबाइल फोन दिला दिया, बच्चों को ये दिला दिया, सब सहूलियतें दिला दी. तो अरे मैं क्या नहीं करती सर. अच्छा स्कूल में डाला, अच्छा कोचिंग क्लासेस में डाला, टाटा स्काई लगा के दिया, फिर भी मेरा बच्चा सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं, मेरी बात नहीं मानता है, यही चलता है. सो पेरेंटिंग इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत फैक्टर है बच्चों के लाइफ में. इट्स अ वेरी क्रूशियल फैक्टर. नाउ जस्ट आई टुक अ पेरेंटिंग सेशन लास्ट मंथ, और वो पेरेंट, दैट लेडी ना, सिंगल वाइफ, सिंगल लेडी है, हस्बैंड नहीं है. And she attended my parenting session in which I said कि बेटा जब भी बच्चे लोग कुछ भी आके बोले तो आप यही बोलना, भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. Always trust your child and say that you are behind him. So उसकी बच्ची ने, she was going for her exam and she said कि मम्मी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, I'm afraid whether I'll pass or not, मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी. तो उनकी मम्मी को मेरा स्टेटमेंट याद आया, तो बोली सर मैं क्या बोलूं. तो आपने उस दिन बोला था भिऊ नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे, तो मैंने बोल दी. मेरे बच्चे के आंख में आंसू आ गए. बोली मम्मी इतना विश्वास है, तुम मेरे साथ हो. मैं बोला हाँ. उन्होंने बोला हाँ. एंड द गर्ल वेंट विथ कॉन्फिडेंस एंड शी रोट द पेपर एंड केम बैक. मम्मी
तुमसे जो शब्द होता है ना, व्यू नकोस में जो पार्टीशिया है, मेड मी सो स्ट्रॉन्ग एंड आई रोट माय पेपर. एक Awesome. सिंगल लाइन, Yeah, yeah, yeah. एक सिंगल लाइन can make a tremendous difference. A single line. That is parenting. Absolutely, absolutely. In fact, यहाँ पर एक स्टेटमेंट मुझे याद आया जो मैं अपने ट्रेनिंग में समटाइम यूज करता हूँ कि लीडरशिप एंड पेरेंटिंग इज नॉट अ पॉपुलैरिटी गेम. और ये जो शब्द है इसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या होगी? व्हाट इज योर कमेंट? पेरेंटिंग एंड लीडरशिप इज नॉट ए पॉपुलैरिटी गेम. सो क्या होता है ना कि we want our child like us or to grow in life, बोलते हैं ना. तो है ना, your sons and daughters are not yours, they come through you, not from you. खलील गिब्रान का एक बहुत ही powerful statement है. So don't prepare them for yourself, prepare it for the society, prepare them for the society which is longing and they have their own thoughts. So सिग्निफिकेंस, मेरा बच्चे का रिजल्ट मैं नहीं रहना चाहिए, बिकॉज वो बच्चे का अपना एक पोटेंशियल, एज यू राइटली सेड कि ना, ही एवरीवन हैज अ पोटेंशियल. तो उसकी कंपैरिजन नहीं होनी चाहिए. और बहुत एज अ पेरेंट हम कहीं ना कहीं प्रूव करना चाहते हैं ना. फॉर माय ब्रदर एंड माई सेल्फ, वी बोथ वर इन सेम स्कूल and somewhere we were rank holders, we were getting ranks, but somehow my brother started losing that percentage because of some challenges of health and everything. So वहां पे comparison start हो गया. तो as a parent, as a teacher, बोलते ना कि कितना अच्छा पढ़ता था, अभी क्या कर रहा है, what are you doing right now, this is not the right way. देख छोटे भाई को देख कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसको देख क्या पढ़ रहा है, पड़ोसी के चाचा के लड़के को देख कहाँ सीखा निकल गया. So we are not here to prove कि ये ऐसा है, उसको देख इसको देख, नहीं, उसके लिए नहीं है. तो मैं हमेशा एक स्टेटमेंट कहता हूँ, आम और पपैया. एक बच्चा आम है तो दूसरा पपैया है. पपैये का फल के सीड को लगाएंगे तो 1.5 साल में आएगा, और आम के सीड को लगाएंगे तो 5 साल में आएगा. लेकिन दोनों में फल लगेंगे, दोनों का टाइम है, दोनों का टाइम है. अगर आपका बच्चा कोकोनट निकला तो 12 साल में देगा फल, लेकिन कल्प वृक्ष बन सकता है. कैन बिकम कल्प वृक्ष ऑल्सो. सो हम यहाँ पे कुछ प्रूव करने नहीं आए हैं कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं. मेरे बच्चे जो है बहुत सही है, और उनका वक्त जब आएगा वो लोग अपना इस पोटेंशियल को अनलिश करेंगे. कंपेयर करने में बच्चे का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हिट करता है. और उसका जो भी पोटेंशियल है सर, यहीं पे जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, व्हेन यू स्पोक एट द स्टार्टिंग की क्यों नहीं कर पाते हैं, ये पेरेंटिंग एंड टीचर्स का एक बहुत प्रोमिनेंट रोल होता है. बिलीविंग इन एवरी चाइल्ड. बोलते ना कि नहीं, व्यू नकोस में दे पार्टीशिया, ये अगर कर दिया तो उसका जो पोटेंशियल है वो निकाल पाएगा. नहीं तो बोलेगा तुम नालायक हो, कुछ काम के नहीं हो, इतना सा मैथ्स नहीं आता तुझे, उसको देख कितना कर दिया, तू कुछ नहीं कर रहा है. 2-3 सम क्या गलत हो जाते हैं, बच्चा घबरा जाता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता है. सो वेरी वेरी डेंजरस थिंग हैपेंस as a parent, as a teacher, when we see such things in kids. Absolutely. In fact, one more of your credential, Prajesh sir, is your almost 400,000 people whom you have trained in goal setting, time management, and career counseling. So, आपका मैंने देखा आज भी आप 15 minutes before you had almost reached this particular Zoom platform also. And that really shows how well you manage your time. But मेरा ऐसा सोच है कि you cannot manage time. You have to manage your own behavior, your own action, and your own self-discipline vis-a-vis time. Because time cannot be managed, but you have to manage yourself. Your comment on it. So I manage, as I said, कि thought process बचपन से मिला है कि ये होना चाहिए. And somewhere now we belong to a very disciplined family, my father, my mother, and fortunately the school in which I went, so वहाँ पे जो principal थे तो वो भी same pattern वाले थे. So क्या what happened कि what happened at home, the same thing got repeated in school. So continuous bombarding मिला. And then as you say ना कि you are the average of
5 people with whom you spend your time ना मतलब. So parents थे और school में भी same था, discipline, systematic process and everything. And when I completed my graduation and all, I got wonderful mentors like Santosh Nair sir is there, you are there. So many people ना वो same pattern वाले मिल गए. Fortunately, it's only because we carry those patterns. ना मतलब we attract the people with the thought process which we have. ना we if I say कि दुनिया में सब गलत लोग हैं तो यू विल ऑलवेज सी रॉन्ग थिंग्स हैपनिंग एंड गलत लोग आपके रेडियस में रहेंगे. इफ यू विल सी देयर आर वेरी गुड पीपल, you will start attracting good people into your life. That is what is a life which I understand. Mera formula, sir, to be very frank and honest, I always say, think it, ink it, do it, and review it. So I cannot do anything without writing. So whatever success I have today and handling so many portfolios, you know, vice president of MCA training, then ambassador into social work and everything, is only by using a diary. I keep on writing. I have my entire thing written. I make a to-do list, a checklist, and then a to-do list, and then priority list. Now, most important thing is priority. First, do what? सुबह उठते साथ ही 10 to 12 o'clock मैं क्या करूंगा? I'll be shooting this mail, this ये सब हो जाए. फिर 12 o'clock के बाद क्या करूंगा? And everything is so planned. So I remember only this line: think it, ink it, do it, and review it. Think करो, ink करो कि तुम कल क्या क्या करोगे, इस महीने भर में क्या करोगे. पहले तो महीने का प्लानिंग हो गया, फिर बाद में रोज का रहेगा कि कल क्या क्या करोगे, कब करोगे, कौन सी टाइम पे करोगे. बस इतना सा लिखना है और कल देखना है कि भाई क्या बोला था 11 बजे करूंगा, अच्छा ये करूंगा तो कर लेते हैं. एंड एंड ऑफ द इवनिंग में उसको रिव्यू करो. सो माय मेंटर ऑलवेज सेड कि कोई अक्ल की जरूरत नहीं, कोई स्मार्टनेस की जरूरत नहीं, कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है. थिंक कर, इंक कर, फिर उसको कर और उसकी रिव्यू कर. और लिटरली आई believe in this, and whatever I am is only because of simply writing it, planning it, writing it, doing it, and reviewing it. That's it. Brilliant. I love it. Think it, ink it, do it, and review it. Brilliant. And review it. I think, and with a prioritization, as you rightly said. Prajesh sir, you have now become a renowned graphologist. So I want you to share, how did you happen to get into graphology? And because I'm sure a person of your eminence and your intellectual capability has gone into it, there has to be a lot of substance behind it. And I also have the same belief like you in graphology. So just a small insight into people so that people can benefit by understanding the power of graphology. So basically, I started my teaching profession. I started my career as a teacher, and then always God's grace. God always sent rejected pieces to me. All the dropouts and all the failures and past and promoted kids came to me for tuitions. I used to work with them. The kids also used to put a lot of hard work. Super, बहुत मेहनत करते थे. But end of the day, मैंने results जो expectation के थे वो नहीं आते थे. For example, the child is sitting for 6 hours, 8 hours with me as well as at home. But exam में जब marks आते थे तो 55%, 60%. So हम कहते हैं ना कि success is equal to hard work. But kids were doing hard work, 6 hours, 8 hours पढ़ रहे, फिर भी results नहीं आ रहे. Pass तो हो जाते थे, but results नहीं आते. So one of my friend, you know him, Pawan Kumar Shukla, he advised me, कि Prajesh, there is a science through which we can understand the psyche, the thought process, the belief with the child is carrying. Now, if you are motivating someone, that motivation stays for a shorter period of time. और एक classroom से बाहर निकलते तो motivation सीधा zero हो जाता है. Because he's carrying certain patterns in his brain. So my friend advised me to go for graphology. So we both went together and we learned the science called as graphology. So logy means study and graph means the graph of your life. So your handwriting, your signature is the graph of your life. So हम लोग बचपन में graph होता था ना, x axis, y axis, graph goes up, है ना? Your graph goes up. हाँ, same way.
Your handwriting, your signature speaks about the graph, the pattern which is there inside you. Pattern. So that is the graph. So pattern kya hai? So it is the graphic movement. It is the brain print of the graphic movement produced in your brain. It is the brain print. Your handwriting का दूसरा नाम है brain print of the graphic movement produced in the brain. So through handwriting, we can identify. So when I learned this science, I could see I could see various challenges in my life itself. As a pattern, I identified 2-3 flaws in me as a leader, as a teacher, as a human being. I had few negative traits, which I changed over a period of time. And now I'm growing right now. For example, I always speak about an alphabet, a letter in graphology, which is T. T is 80%. T hota hai 80%. If your T is perfect, 80% karyakram is done in your life. So what is T? So T has a stem, hai na? Ek stem hota hai, and there is a crossbar which we put. So T has a stem and there is a crossbar. Ab ye stem to tumne bana diya, but where you lift your pen and put the crossbar. Now if you lift the pen and put the crossbar at the top, crossbar is that line which we put in T. If you put it in the middle and if you put it in the bottom, that defines your confidence and your self-esteem. People, those who put the crossbar at the top, will have very high self-esteem, high goals, because high goals कौन रखते हैं? जिनका self-esteem high होता है. For example, association में, I always say कि अभी हम लोग षण्मुख आनंद भरेंगे. आपने सुना उस दिन सेशन में, I was there. तो I said कि षण्मुख आनंद भरेंगे. मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज मेरा सेल्फ एस्टीम हाई है, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, तो मेरे गोल्स भी हाई रहते हैं. अरे हो जाएगा यार. बट इफ माई क्रॉस बार इज समवेयर इन बिटवीन, नो सर षण्मुखानंद नहीं. ये हम लोग रविंद्र नाट्य मंदिर में 1000 लोगों को लाए. सो ये एवरेज हो गया. और जिसका क्रॉस बार एकदम नीचे, अरे सर 200 से चालू करते हैं, छोटा हॉल लेते हैं. नहीं हो पा. तो आपने कहा ना कि if I say I can, I can. If I say I can't, I can't. You are right. So graphology helps us to identify what are the patterns which are there inside you, which is pulling you down. Your strength, your areas of improvement, rather than saying weakness, I can say areas of improvement. For example, if I'm putting the crossbar in between, if I start practicing and start putting at the top, so what happens? Ki pen niche se utkar, it goes up. Wow. So it goes up. So you have to put efforts to lift the pen to go up. So repeated practicing, तो आपके brain के patterns will go up. आपका पेन ऊपर जाता है, मूवमेंट ऊपर होता है, तो आपके पैटर्न्स ब्रेन के भी ऐसा देखने लगता है, ऐसा जाता है. Wow. Lifting anything, and so the brain के patterns बदलते हैं. So that lifting of the pen is connected to the lifting of your thought process in the brain. That is how it works. Awesome. I think, but you said that only one letter T. If you shift it, you can shift your entire process. Yeah. Yes. Prajesh, your thoughts has been endorsed by Louis A., one of the mentors whom I really follow. And she used to say that you can change your life with graphology. So when we were discussing about it, I got reminded by that. The next aspect which I was very impressed by you is your social contribution. And I, as a human being, strongly believe that your acts of kindness which you do, or your act of selfless activity which you do, is very, very important for you to have your holistic well-being for your own self. And at the same time, it has got a lot of contribution towards your level of happiness. Your comment on that, sir? Yes, sir. I always I could see my father doing it. मतलब किसको भी मदद करना है तो he's always ahead. मतलब today also he's 77 plus, going to work. He says कि मुझे काम करते ही मरना है. Wow. मैं घर पे नहीं बैठ सकता हूँ. इकिगाई वाला कॉन्सेप्ट है उनका. He keeps on working. So किसी के घर में डेथ होता है ना सर, so my father will go there. फिर वो सब
बांधना लाश के लिए, जो बॉडी के लिए उसे बांधना पड़ता है, सब चीज करना है, तो ही रीचेस देयर फर्स्ट। एंड ये सब क्योंकि किसी को बांधने नहीं आता है, रिचुअल्स है ना, कि सब नया जमाना आ गया तो पुराने रिचुअल्स लोगों को आता है, तो ही विल बी ऑलवेज इन द फोर फ्रंट। वो सब पूछा नहीं, कुछ नहीं, बांधना चालू कर दिया, सब चीज कर दिया। एंड this I have seen him doing it. And then the school in which I was a student is a very good school in Malad. The principal gave free ship to me and my brother for 12 long years. He didn't charge a fees. हमारा फ्री शिप था, लाइक एवरी ईयर हम लोग कैबिन में जाते थे, प्रिंसिपल बोलता था कि मम्मी को पूछो इस साल फीस भर सकते हो क्या, तो हम लोग घर पे जाके मम्मी को पूछते थे, तो मम्मी बोलती थी कि नहीं बेटा पॉसिबल नहीं है, सर को बोलो कि फ्री देने के लिए। सो हम लोग जाते थे कैबिन में द नेक्स्ट डे, तो पूछते थे कि बेटा क्या हो गया, व्हाट मदर सेड सर वी डोंट हैव दैट मच दिस ईयर आल्सो। तो सर ऐसे देखते थे हम, ठीक है, तो कैलेंडर में ऐसा सर्कल करते थे और फ्री लिखते थे, तो आप में आंसू आ जाते थे कि ये साल भी बच गया अपना, फ्री में एजुकेशन क्वालिटी मिल रहा है। तो बचपन से आई हैव सीन Samaritans helping us. So when it is my time, I should give back to the society. Absolutely. And fortunately, एक statement पढ़ा था कि an individual has not started living unless and until he doesn't rise above from his individualistic concern to the broader concern of the society. वो इंसान जी कर भी मरा हुआ है, जब तक वो अपने इंडिविजुअलिस्टिक कंसर्न से उठकर ब्रॉडर कंसर्न ऑफ द सोसाइटी नहीं सोचता है, तो वो इंसान जी भी ही नहीं रहा है, तो मतलब ही नहीं है। तो गांधी जी का भी स्टेटमेंट है, इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ, अनलीश योर पोटेंशियल, इफ यू वांट टू फाइंड योरसेल्फ, गिव योरसेल्फ इनटू द सर्विस ऑफ अदर्स। तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, whatever I am as a Prajesh Trotsky, as a teacher, vice president of anything, is only because as a teacher I gave myself for the development of my kids. वो बच्चों के ग्रोथ में मैंने अपने लाइफ को देखा, तो मेरा पोटेंशियल निकल गया बाहर। The moment you give yourself into the service of others, your potential grows like anything. So मेरे मेंटर हमेशा कहते हैं कि लाइफ का दो पर्पस होना चाहिए, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। ग्रोथ और नहीं है, एंड है, एंड। So when I used to go to listen to Bhagavad Gita lectures and all at the age of 24, 25, so my trainer who used to teach me Bhagavad Gita, so I was the only black haired person, rest all were gray hairs there, मतलब सब उम्र हो गया था, 50-55 के थे सब। So she pinpointed me, see that boy who is sitting there. So she said कि इस उम्र में आना चाहिए भगवत गीता सीखने के लिए। आप सब लोग तो दुनिया भर का सब पाप करके, दुनिया को लूट के, सब कुछ खत्म होने के बाद फिर अभी जब मरने का टाइम आया तो तुमको समाज सेवा, सोशल वर्क, सब याद आ रहा है, आर्थराइटिस, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब आ गया, अब जाने का टाइम आ गया, तो अभी सोशल वर्क करेंगे, 3,000 5,000 कंट्रीब्यूट करेंगे, 25,000 करेंगे, अच्छी बात है, करो, बट व्हाई कांट वी कंट्रीब्यूट through the work what we are doing? So see, as a teacher am I growing? Yes. As a trainer am I growing? Yes. I'm growing in my life is only because I'm contributing. मैं अपने काम के जरिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो मेरा ग्रोथ है। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीस ऑफ माइंड है। रात को आई स्लीप विद इन 10 सेकेंड्स। मैं घर पे पहुंचता हूँ, खाना पीना खाया, थोड़ा सा वाइफ बेचारी पूछती है आज क्या हो गया, इतने में ही मैं सो गया रहता हूँ। No medicines required, no goli required. 10 seconds I get sleep. I can sleep without AC, I can sleep without fan, I can sleep on the bench, on the road, in train, in bus. I can sleep anywhere. I don't require any fan or an AC to sleep. It's awesome. Only because a peace of mind hai, because contribute karte hain. Absolutely. You said very beautifully, growth and contribution. I remember there are 6 basic human needs.
certainty, uncertainty, significance, love, and growth and contribution. आपने जो बोला ना, growth and contribution automatically gives you love as well as significance. Yes. And it takes care of all the uncertainties of life and gives you that element of certainty. Brilliant, awesome. Lisa, that day I was witness to your leadership, where almost about 1,000 plus of your colleagues, your peers, your friends are all assembled on your able management and leadership style. And I saw the way they were all enjoying it and they were all benefiting it. So I wanted to ask you this, as a vice president of Maharashtra Coaching Class Association, your success is very much evident. I want to ask you this, because especially young entrepreneurs or young upcoming boys and girls who will be shouldering responsibility in various areas of life. What is the secret of leadership? Or what is the crux of leadership? How do you lead people? How do you get people to follow your passion or your direction? It's not easy. I would say, how do you influence and persuade people in order to make them do the right things or follow a path which will enable us to make a better society, community, and a nation? So see, leadership, the biggest parameter for a great leader or influencer, we can say, or persuader, whatever he's saying, he himself has to live it. Yeah. Otherwise, it becomes fake leadership. So, I have an habit of sending messages on WhatsApp. People don't get my messages every now and then. I only send that message which I live and follow. Or from today, I've decided that I'm going to do this. Otherwise, I don't send a single message to anyone. People, those who know me, mere taraf se, when I take some graphology sessions or NLP session, uske messages jayenge ki my next session is on so. Otherwise, forward karte na aajkal. Daily morning, everyday thought, daily thought, this thought, that thought. I don't send. If I send, that means I'm living it. So leaders' first quality is, वो रिफ्लेक्ट करता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है ऑलवेज. लाइक गौतम बुद्ध जब चलते थे तो उनके 2.5 किलोमीटर में रेडियस में लोग सुधर जाते थे. 2.5 किलोमीटर रेडियस में लोग ऑटोमेटिकली सुधरते थे, बिकॉज उनका ऑरा होता था. इट वाज द ऑरा ऑफ द पर्सन who lived that life ना. सो अगर गौतम बुद्ध के 2.5 किलोमीटर है तो अपने तो 2.5 मीटर के रेडियस में अगर लोग ठीक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. तो whatever you say, you preach, you have to live it. That is the first quality of a leader, and I could lead is because I'm doing it. तो मुझे ना बोलने में ऐसा डर भी नहीं लगता क्योंकि मैंने किया है. And secondly, patience, understanding. मतलब every single human being is different. हर इंसान अलग होता है. सो ये अलग अलग लोगों को मैनेज करना ये आना चाहिए. तो मैनेजमेंट का स्पेलिंग होता है MANAGEMEN. सो मैनेज मेन, एंड द T stands for trustfully. Wow. So manage men trustfully, because no one is perfect in this world. And at times I manage men tactfully also. इस्तेमाल करना है उसको, tactfully भी आना चाहिए. दोनों. You should be a deadly combination of a Brahmin and a Kshatriya. तुमको ब्राह्मणगिरी भी आना चाहिए, क्षत्रिय भी. तो जहां पे ट्रस्टफुली है तो ट्रस्टफुली करो, नहीं तो फिर टैक्टफुली भी करो. इस्तेमाल कर कर कुछ ना कुछ उसका फायदा हो रहा है ना, कि कोटे सिक्के चलते देखे, चढ़ते सूरज ढलते देखे, खोटे सिक्के चलते देखे. सो सिक्का भी चलेगा खोटा और सूरज ढल भी जाएगा. मतलब बड़ा इंसान भी चला जा सकता है और खोटा सिक्का चल सकता है. तो हमको मैनेजमेंट बराबर आना चाहिए. लीडरशिप को
आना चाहिए कि कैसा सबको साथ में लेके चले ना। हम लोग कहते हैं कि ऑलवेज से कि रंगों की इस महफिल में बेरंगी भी हुआ करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं है। रंगों की इस महफिल में बेरंगी भी हुआ करते हैं, बेरंगों में रंग भरकर हर डगर को सजाना है। बेरंगों में रंग भरकर हर डगर को सजाना है। इस तरह नहीं तो उस तरह सही, हर तरह से हो वही। इस तरह तरह के इस झमेले में हर तरह का हो जाना है। इस तरह तरह के झमेले में हर तरह का हो जाना। और लास्ट वाला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लीडर का है, हर राह हर मोड़ हर डगर, अगर तुम साथ चले खुद के तो सारा जमाना साथ हो जाना है। तो यू हैव टू लीड बाय एन एग्जाम्पल, तो सारा जमाना आपके साथ हो जाएगा। आपको कुछ चिल्लाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जियो तो लोग तुमको फॉलो करेंगे। दैट इज हाउ लाइफ इज। Awesome, awesome, awesome. That is a beautifully put up, authenticity, trust, tactfully, and as you already said, by being adaptable and flexible. I think these are all beautiful, I said, steps or principles which anybody can adapt or follow first and then take it forward. Absolutely. In fact, Prajesh, वो दिन भी जब मैं आपका सुना, I was very impressed. ये आपने जो शायरी जो आप बोलते हो हिंदी में, इतने बढ़िया से आपका आता है और एकदम स्पॉन्टेनियसली आता है, दिल से आता है और बहुत टाइमली आता है। इस हुनर को किस तरीके से आपने डेवलप किया? ये तो सर वो जैसे अभी मैंने कहा ना कि अगर आप जिएंगे ना सर, आप जिएंगे ना, राइट, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। यस। अभी ना राहे जिंदगी एक ऐसा सिलसिला है जिसकी तामीर तेरे इरादों से हुआ करती है। सो व्हेन आई एम सेइंग दिस, तो मुझे बायहार्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका एक फ्लो जो होता है ना, ये हम कर रहे हैं। तो राहे जिंदगी एक ऐसा सिलसिला है जिसकी तामीर तेरे इरादों से हुआ करती है। तू चाहे तो हर कदम में जिंदगी भर दे, तू चाहे तो हर सांस में खुशी भर दे। तेरे कदम तेरे चाल है, तेरे चाल तेरे इरादे हैं, तेरे इरादों में जिंदगी भरता चल। राह जिंदगी एक ऐसा सिलसिला है। तो मैं जब चलता हूं ना, तो मेरे कदम मेरे चाल है, मेरे चाल मेरे इरादे हैं। और मैं जब चलता हूं तो लोग बोलते हैं कि यार कोई तो आ रहा है, मतलब वो है ना। तो you live it, so no need of by hearting it. एंड वो कंटेक्स्ट पे आ जाता है, उधर पे ऐसा ऐसा आ जाता है, निकलता है। तो मुझे गिने चुने 40-50 शायरीज आते हैं, लेकिन मैंने वो जिया हूं। मैं कोई शायर नहीं हूँ। मैं मस्ती मजाक में मैं ये भी मैं शायर नहीं हूँ, ना ही मैं केबल का वायर हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ 40-50 शायरी मुझे आती है, लेकिन उस पूरी जिंदगी में जिया हूँ मैं। जिया हूँ तो जिया हूँ, तो मतलब कुछ वो ऐसा एक्स टेम्पो अंदर से निकल जाता है ऑन स्पॉट, जहां पर से भी। Absolutely. In fact, we have got a lovely set of people who have joined in and they're very actively participating. आप में से किसी को अगर कुछ पूछना है तो मैं request you to just type it on the chat box. My colleagues are there, Nair sir, and we will immediately ask Brajesh sir about this question. So please take the next 2 to 5 minutes and आपका जो भी प्रश्न होगा आज के जो टॉपिक के ऊपर, अनलीश योर पोटेंशियल, और बाकी जो पहलू में हमने बात किया है, स्पेशली एजुकेशन, पेरेंटिंग, लीडरशिप, तो आपको अगर कोई सवाल पूछना है ब्रजेश सर से तो प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स. आई एम गोइंग टू गिव यू नेक्स्ट 5 मिनट्स बिकॉज सर आपने मैंने आपका 1 घंटे का समय लिया था और कैसा ये 1 घंटा से निकल गया मालूम नहीं पड़ा. ऑलमोस्ट 6 we have just completed 1 hour, so it was awesome. So let us take the next 5-10 minutes with your permission. Yes. Open the forum for people to ask questions also, our learned friends to ask questions. Even on the Facebook, if it is there, Vaishali, please let me know. I will accordingly ask those questions to Prajesh sir. Yeah. Vaishali, by the time the audience, they put any question, let me ask you one more thing. जो मेरा एक सवाल है, वो जो एक सेल्स मास्टरी टॉक शो का एक अहम मुद्दा है कि हमारा देश भारत एक
No, not very distant past, एक सोने की चिड़िया था. It's called the Golden Land. For almost 15, from the 1st century to 13th century, we were the number one economy in the world. Even up to 18th century, we were contributing to 29% of the world GDP. और आज एक क्लियर कट लक्षण है कि हम वापस तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं. So I wanted your advice or your input as to how we can make India again the सोने की चिड़िया of the world. Sir, I always entrepreneurship विजनरीज की जरूरत है. लाइक सबको नौकरी चाहिए लेकिन देगा कौन? लाइक नाउ यू आर रनिंग your Pacific Trends company, like 150 plus, you are there because of which 150 plus people are getting employment. वो जिगर एंटरप्रेन्योर मतलब एक जिगर होता है, एक माइंडसेट होता है जो इंडिया में पैदा नहीं होता. एजुकेशन सिस्टम doesn't create entrepreneurs. They create नौकरशाही, एम्प्लॉयमेंट के लिए तैयार होते हैं क्योंकि फियर है. फियर दो लाइन के बीच में देखो, नोटबुक्स जो है ना उसके अंदर दो लाइंस होते हैं. दे आर कॉल्ड एज रूल्ड पेपर. व्हाट दे आर कॉल्ड एज रूल्ड पेपर. व्हाई इट इज कॉल्ड एज रूल्ड पेपर? बिकॉज वो दो लाइन के बीच में ही सोचना है, उसके बाहर नहीं जाना है, उसके बाहर नहीं जाना. वो दो लाइन के बीच में ही लोग रह जाते हैं. तो ठीक है, एजुकेशन लेंगे, मैं भी वहीं से निकला हूँ. आई एम ऑल्सो फ्रॉम सेम सिस्टम, बट समवेयर वो था ना, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी. मतलब मुझे अच्छा लगता है रिस्क लेना. तो मेरे मेंटर हमेशा कहते थे, द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज टू लिव अ रिस्कलेस लाइफ. द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज टू लिव अ रिस्कलेस लाइफ. तो वो वहां से रिस्क लेना, तो डर है. मतलब फेलियर का इंडिया में डर है. बच्चा अगर 7वीं में कहीं फेल हो जाता है एक आधा सब्जेक्ट में, तो मैंने देखा है कि घर में एक माहौल, अरे बाप रे फेल हो गया तू, फेल हो गया तू, फेल हो गया, अरे बाप रे ऐसा कैसा हो गया. तो हम वो फेल होने से डरते हैं. वो डर जो है इसको निकालना पड़ेगा. फेल तो होंगे यार बच्चे, कितने बार गिर कर चलते हैं ना, गिर कर चलते हैं. I'll just add an incident here, then we'll take the question. Yes. Like I went to meet one principal at 1 o'clock in the afternoon. So 1 o'clock ऐसा टाइम होता है जहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन छूटता है, प्राइमरी सेक्शन आता है. So there was a lot of rush. तो प्रिंसिपल टोल्ड, प्रजेश यार तेरे से बैठ के बात करना है फुर्सत में, कैन यू वेट फॉर 15 मिनट्स में वाइंड अप करता हूँ, फिर हम लोग बैठ के फुर्सत में बात करेंगे. सो मुझे ऐसा आदत है बाहर जाके खड़े रह के देखने का. ऑब्जर्वेशन लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो आई वाज स्टैंडिंग इन द गैलरी. तो सेकेंडरी सेक्शन के बच्चे छूट रहे थे, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे आ रहे थे. तो वहां से एक छोटी सी बच्ची भाग कर आई अपना बैग लेकर, एंड शी वाज स्टैंडिंग इन द लाइन. मतलब उसको लाइन में खड़े रहने के लिए भाग कर आई. सो व्हाइल रनिंग ना, बैग वाज टू हेवी एंड शी टॉपल्ड अप एंड शी फेल डाउन, और उसको थोड़ा सा लग गया. उसकी मम्मी वहां से भाग कर आई एंड शी स्लैप्ड दैट गर्ल, फाट फाट करके 2-3 लाफा मार. रीजन, तुझे देखकर भागने नहीं आता है. अरे बाबा. तो आप सोचो एंकरिंग क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम इफ दिस गर्ल हैज एन एथलीट इनसाइड हर, खत्म हो गया ना, उधर का उधर ही, वो उधर का उधर ही खत्म हो गया. क्योंकि whenever she will participate in running race in future, she will say कि if I'll run, there is a possibility I'll fall. If I'll fall, people hit us. मतलब मैं गिरूंगी तो लोग मारते हैं मुझे. तो इसके लाइफ से वो स्प्रिंटर तो निकल गया. राइट. तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, ऐसा कितने बार हम कुछ काम करना, यू विल नॉट डू एनीथिंग, बिजनेस नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं. तो ये सब थॉट प्रोसेस, वो फेली, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए. तो ये सब रहेंगे तो फिर लोग ट्राई नहीं करते हैं. Yes. और ट्राई कैसा करते हैं सर, अब भी चालू करेंगे धंधा और बोलते 6 महीने में रिजल्ट आना चाहिए. यार कैसा आएगा 6 महीने में रिजल्ट, कैसा आएगा? 3 years यू शुड स्टे स्ट्रॉन्ग. बट डर लगता है, वो डर जिस दिन हटा तो फिर वो विल हैव विजनरीज. एंड बोलते ना कि सोने की चिड़िया, एंटरप्रेन्योरशिप विजनरीज आर रिक्वायर्ड टुडे.
ऐसा है। Absolutely. In fact, आपने बहुत सही बताया कि entrepreneurship, which was our actual DNA of our Yes. earlier ancient and medieval time, उसी को ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स ने कॉन्शियसली हमारे को उसको दबोचा और उसको निकाल Yes, 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 yes. उसको वापस उत्पन्न करना बहुत जरूरी है। सर, एज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट इसको किस तरीके से उत्पन्न कर सकते हैं? सर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज कम, NEP। हाँ, तो जहाँ पे एक्सपीरियंशियल लर्निंग एंड 360 डिग्री ग्रोथ के ऊपर बात हो रही है। राइट। सो एक्सपेक्टिंग द एंटायर नेशन स्टार्ट्स इट बाय 2025, सो दैट उस स्कूल लेवल से ही, जैसे कि अभी 8th स्टैंडर्ड से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस आ रहे हैं। नाउ मेनी किड्स ना, आज के लिए शार्क टैंक काफी अच्छा फेमस हो रहा है ना, तो Yeah. बच्चे देख रहे हैं। इनफैक्ट माय सन एट द एज ऑफ 10 ही वॉचेस शार्क टैंक। वाओ। सो हाँ, तो शार्क टैंक ये सब जो रिले हो रहे, मतलब सास भी कभी बहू थी, छाछ भी कभी लस्सी थी, ये सब देखने से अगर अपने शार्क टैंक जैसे, बिल्कुल देखो शार्क टैंक में एटलीस्ट है ना, एक इसने ये समोसा का, स्पेशल समोसा का बिजनेस चालू किया और यहाँ तक स्केल अप हुआ, इतना बिजनेस है। तो एक बच्चा, अगर मेरे बच्चा 10 साल का अगर बैठ के देखता है ऐसा, अरे यार मतलब मैं भी ऐसा कुछ चालू कर सकता हूँ, तो ये एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं डिग्री कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता हूँ, जिसमें 40 आवर्स में से लास्ट 3 आवर्स है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। एक तो है बीइंग एन एम्प्लॉय, तेरे एटिकेट्स क्या होने चाहिए, बट एट द सेम टाइम हो सकता है ना तो एंटरप्रेन्योर बन सकता है। तो एक 3 आवर्स का सेशन, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर व्हिच इज रिक्वायर्ड, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। तो एजुकेशन सिस्टम से ही आ जाना चाहिए। एज ए टीचर देखो, सी व्हेन अ टीचर इज टीचिंग एनी टॉपिक, फॉर एग्जांपल एक कॉमर्स में बच्चा जाता है 10th के बाद, तो SP है, OC इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। सो सिखाते क्यों है, सीखते क्यों है, ये इसके पीछे का रीजन। अभी मैं अपने क्लासरूम में बच्चों को पूछा, बेटा इंग्लिश हिंदी मराठी क्यों पढ़ रहे हो? सर वो एग्जाम में है। सर वो एग्जाम में, अरे बेटा इसके लिए नहीं कि एग्जाम में है, इसके लिए सीख रहे हो ताकि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने आए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो, मराठी आएगा तो इंटीरियर ऑफ महाराष्ट्र में जाके धंधा डाल सकते हो। तो सीख क्यों रहे हैं और सिखा क्यों रहे हैं? अगर हम सिखा रहे हैं विद एन इंटेंशन टू क्रिएट कॉमर्स का मतलब ही एंटरप्रेन्योर निकलने चाहिए उसके अंदर से। बट हम सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाएंगे तो फिर बहुत डेंजरस हो जाता है, तो नहीं हो पाता है। सो व्हाई आर यू टीचिंग देम? सो एजुकेशन is not filling vessel but igniting fire. It is not filling vessel but igniting fire. बर्तन भरना एजुकेशन नहीं है, बर्तन के नीचे आग लगाना। तो आग अगर लगी है तो वो कुछ कर पाएगा ना, तो that is what is required. Absolutely. In fact, there is a last question, which I can take from the overall feedback from the audiences. ये जो आपने बहुत बढ़िया मुद्दा जो निकाला है कि the distinction failure, distinction mistake and distinction fear, ये आपने बताया, ये तीनों चीज, fear of failure, fear of mistake, fear of rejection and fear of the fear is what stops people from really unleashing their potential. And तो मैं आपका इस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फियर, फेलियर, मिस्टेक, इसको किस नजरिया से देखना चाहिए इन अ पॉजिटिव सेंस? यस, तो मैं हमेशा कहता ना, मेरे मेंटर हमेशा कहते थे कि the mess which you make in life becomes the message for others. वाओ। तो मैं हमेशा ये भी बच्चों को भी कहता हूँ, सबको भी कहता हूँ, गलती करना गलत बात नहीं है, बार बार सेम गलती करना गलत बात है। यस। सो कीप ऑन रिपीटिंग द मिस्टेक्स, बिंदास करो, गलत करो, अलग करो, नया करो, ठीक है, अलग ये करते रहना है। तो उसे कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, वो क्या कहते हैं ना, रोड में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, उधर पे क्या लिखा रहता है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो लाइफ में भी क्या रहना चाहिए, काय चाललंय आयुष्यामध्ये, वर्क इन प्रोग्रेस। तो उसमें सबसे पहले ना पिलर लगते हैं, फिर बाद में गटर्स लगते हैं, फिर रेल ट्रैक लगता है, फिर मेट्रो फिर स्टेशन बनते हैं। तो ये
ये ग्रोथ, ये करते रहना, गलतियां करना और सुधारना. तो हम लोग हमेशा, आई ऑलवेज मेंशन अबाउट engineering करना लाइफ में. engineering, so what is the meaning of word engineering is identify your challenges and rectify those challenges. तो गलतियां करो, आइडेंटिफाई करो, उसको रेक्टिफाई करो. नेक्स्ट टाइम नहीं गलतियां होंगी, फिर आइडेंटिफाई होगा, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं. तो हमारा जिंदगी में वी आर ग्रोइंग बिकॉज वी आर रेक्टिफाइंग द मिस्टेक्स विच वी मेड लास्ट टाइम, एंड देन विल डू न्यू मिस्टेक्स. फिर से नया मिस्टेक्स करेंगे, फिर उसको रेक्टिफाई करते रहो, फिर करते. तो तुम कभी भी लाइफ में ना, मतलब यू ऑलवेज बी अहेड, मतलब हमेशा आगे ही रहोगे, बिकॉज तुम एंटायर डे यू आर बिजी taking the risk, rectifying those mistakes and improving those mistakes. और 100% वही जो गलती होती है वो लेसन हो जाता है हमारे लिए बहुत बड़ा. मतलब whatever. और we in NLP ना, we always say one thing: you make right choices in your life. You always make the right choices with whatever best knowledge which you had at that point of time. So तुम बुरा मत मान के ले हो कि अगर तुमसे कुछ गलती हो गई, ब्लंडर हुआ, वो बेस्ट नॉलेज था उस टाइम का तुम्हारे पास. फिर उससे हम आगे बढ़ते हैं. इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं गुजरता इधर से, अगर मुझे जरा भी भनक होती तो मैं मुड़ता उधर से, लेकिन मैं तो अजनबी था गुजरा जिधर से, मैं तो अजनबी था गुजरा जिधर से. सो करो, गलतियां होंगी, एक्सेप्ट करो कि गलती, to make error is human and to forgive is divine, but don't repeat the same mistake. Awesome. That's Thank you very much. I think it's a brilliant summation of what we learned. Prajesh sir, in the last 1 hour, 10 minutes, I think you have given so much of input about various important things like education, parenting, leadership, and how to face failure and how to become a good entrepreneur. So thank you very much for your valuable time. It was a real pleasure for me as a student, as a trainer, teacher, coach, mentor, to get all these different brilliant inputs. And I'm sure all those people who have watched it live and all those people who will watch it subsequently in the YouTube would definitely benefit from your very, very deep, profound wisdoms, of nuggets of wisdom which you shared with us. Thank you and God bless. Thank you so much, sir. Sir, we have been learning from you and all the mentors in and around us. We are only because of you people. Like, see, you carry those wisdom from ages, like then you transfer it to us and we take it to the other generations. So that is what transfer of knowledge happens. Thank you. Keeps on happening. Thank you so much, sir, for this wonderful opportunity. Thank you. And thank you everybody who has been on the Zoom platform with us. Kinjal, Smita, Amar, Asha. Thank you very much for all of you participating. Mananda, all of you giving your inputs in between. And Jagmohan sir, Vaishali, thank you very much for you being there. So we again wish you adieu. And again, promise you that on the 29th episode of the Sales Mastery Talk Show, we will get yet another brilliant, deep insighted, profound, experiential, one is authentic persons like my friend Prajesh sir, and keep on adding more such nuggets of wisdom for each of us to become a better human being than what we are. As Sir rightly said, we're all work in progress. Till the last day of our life, we'll keep on learning. So thank you for being there. Thank you for being open to learning. And let us keep on learning and make this world a better place to live in. Thank you and God bless. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And as somebody has requested for a recording of this, that also we'll try to provide you. I'll send it to Sir also, Prajesh sir. And we'll obviously, of course, putting it in the YouTube, so we can definitely view it. And it will be also available on the link will be available on our Facebook. Thank you and God bless. Thank you, sir. Thank you, sir.